your daughter. Okay. Now the weight of this body through CG acts in the downward direction. However, one force acts in the upward direction that we call as bind force. Upthrust, point So force. FB is bind force. ठीक है? Now the question comes, where is bind force acts? कहाँ पे एक्ट करेगी ये? Center of कोई mass. बता सकता है बच्चा? Centroid of the body, you can say. This force acts along acts at the point that we call as centroid of that body. ठीक है? So now where this bind force act, so that point we call as, क्या नाम है उसका? Metal The center. point where this bind force act, no. That we call as center of buoyancy. That we call as center of buoyancy. Now I take one more example. Now say I have this body now. अगर आप इस बॉडी की बात करो जो मैंने पहले ड्रॉ करी है, now here both centroid and center of buoyancy coincide with each other. Okay. However, in this case, the centroid is if you meet these two opposite diagonals. So here you have the centroid C. Say this is the centroid of this body. Okay. Now where is center of buoyancy now? तो जो Now submerged you can part see है here उसका this center. part, हाँ जो submerged part है, this part of the body is responsible for displacing the fluid. ठीक है. अब इसका जो सेंट्रॉइड आपके पास आएगा, that we call as point B as center of buoyancy. ठीक है. So through C, weight acts in the downward direction. ठीक है. And through B, the bind force acts in the upward direction. Now, if W is equal to FB, if W is equal to FB, that is the condition for floating body. ठीक है. कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में आप डिप करते हो और उसमें वो फ्लोट कर रही है, तो इन दैट केस यू कैन से the weight of the body is equal to the bind force FB. ठीक है. Now if weight is greater than FB, तो क्या होगा? The Sink body हो जाएगा. moves in the downward direction, सिंक कर जाएगी. ठीक है. Now if weight is less than FB, बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ आएगी. जैसे आप देखना चाहो तो अगर आपके पास बकेट है, उसमें आप एक ग्लास ले लो. ठीक है. और ग्लास को अगर आप डिप करते हो, अगर उसको फिल करके आप ग्लास को डिप करोगे, तो क्या होगा? वो ग्लास जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा बकेट में. ठीक है. अदरवाइज अगर आप ग्लास को एज इट ही डिप करो और पूरा उसमें वाटर फिल ना हो, आप फिर उस ग्लास को छोड़ो, तो वो कुछ टाइम के लिए ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है. सर व्हेन दैट ग्लास कम्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. Okay. Now we have these three conditions with us. Now I give you some conditions. Now when you say the stability, when you talk about the stability of any submerged or a floating body, so to discuss that stability, you must know the meaning of term equilibrium.
ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? नाउ फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, द कंडीशंस आर द ग्रेविटेशनल फोर्स and the buoyant force. There is the conditions between weight and the buoyant force. The conditions are, the first one, it must be collinear. ठीक है, जैसे इस केस में आप देखो, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक होना चाहिए इनका. It must be collinear. Second one is equal in magnitude. ठीक है. And third thing is acts in opposite direction. Okay. So when you say the body is in equilibrium, so for body to be in equilibrium, we have three relations for weight and buoyant force. So those relations are must be collinear, equal in magnitude, and acts in opposite direction. Then you say that body is in equilibrium. Now we have three different types of equilibrium. One is Yes, unstable sir. equilibrium and neutral equilibrium. Okay. So we have three different types of equilibriums: stable, unstable, and neutral. Now the stable equilibrium means you give a small displacement to a body. Okay. And body restores its original position. Okay. Unstable means you give small displacement to a body. Okay. And that body takes new position. And the third case is you give small displacement to a body and body remains at rest at that new position. ठीक है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक. आपने हाइड्रोस्टैटिक बैलून देखा होगा कुछ इस तरह से, जिसमें नीचे एक बकेट होती है तो कोई पर्सन उसमें बैठ सकता है. देखा है ऐसे कोई बैलून? यस सर, Yes, हॉट एयर sir. बैलून. ठीक है, हॉट एयर बैलून बिल्कुल कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है ना. इस केस में क्या होता है, अगर आप इस बॉडी को डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, तो अगर ये कुछ इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो बॉडी जो है अपनी इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी. ठीक है. सो दैट इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. डिस्प्लेस किया, बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है. नाउ से अब ये एक सरफेस है आपके पास. ऑन दिस सरफेस यू हैव दिस बॉडी. ठीक है. इसको आपने डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया. जब आपने डिस्प्लेस किया तो ये उसकी पोजीशन थी. ठीक है. तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये बॉडी जो है वो यहां पे आ जाएगी. ठीक है. सो दिस वन इज इट्स न्यू पोजीशन. आपने यहां पे छोड़ा था इसको, ये डॉटेड मैंने शो किया है. इट गोज टू हियर. ठीक है. जब आपने डिस्प्लेस किया, देन बॉडी कम्स इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. It totally takes the new position. Then
यू हैव Yes, दिस वन, sir. ठीक है ना। टेक ए बॉल, राउंड शेप में बॉल है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा मूव किया, रोटेट किया आगे की तरफ, तो क्या होगा, जहां आपने उस बॉडी को छोड़ा उसी पोजीशन में बॉडी जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।